Hello cuties, how are you doing today? I hope you're doing fine and taking good care of yourself. So welcome back to Learn Forward from Hi Kids Feather Cap. And I'm back with the topic good manners. Do you want to learn about good manners with me? Okay, so let's start the topic. Alright, good manners are something that we should learn and practice it, okay? Because if we show our good manners to everyone, then we will become very good students. Okay, let's see what is the first good manner. First one is greeting the neighbors. So who are neighbors? Who live near to our house. जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Neighbors. ठीक है? So greeting our neighbors मतलब उन्हें greet करना. नमस्ते, hi auntie, hello auntie, hello uncle, namaste uncle. So like this, whenever you see them, you should greet them. आपको उन्हें greet करना चाहिए. Okay? Good. Next is saying please and thank you. So whenever you want something, what do you say? Please mama, can I have this toy? Please mama, can I go out for play? Right there, like this, you see? So always use please. Okay? And thank you. हम thank you क्या बोलते हैं? When we get something, okay? Then we say thank you for this. Thank you for the gift. Thank you for the play. Like this, we should always say thank you. Okay? Never forget to say please and thank you. Next is waiting for the turn in a queue. So queue is a line. Okay? Queue is a line. जब भी आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए एक लाइन बनी हुई होती है, राइट? लाइक आप जब जाते हैं मूवी देखने के लिए तो मूवी के लिए टिकट्स होते हैं ना, टिकट्स लेने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है. ओके, सो ऑलवेज वेट फॉर द टर्न. आपको हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए. ये नहीं कि आप लाइन को ब्रेक करके आगे चले गए. नो, दैट इज बैड मैनर्स. सो हमें लाइन में खड़े होके अपने टर्न का वेट करना चाहिए. ओके, दैट इज waiting for the turn in a queue. Queue is a line. Okay. Next is throwing garbage in the dustbin. This is very important class. We should always throw the garbage in the dustbin. हमें कभी भी garbage यहाँ वहाँ spill नहीं करना चाहिए. We should always throw the garbage in the dustbin. Dustbin इसलिए तो होते हैं ना जिससे कि हम garbage throw कर सके. So we should always throw the garbage in the dustbin. अगर स्कूल में हम जाके पेपर टीयर करके यहाँ वहाँ फेंकते हैं, then what will happen? A classroom will become dirty, okay? And the teacher will scold us. वो आपको डांटेगा. So never do this. Always throw the garbage in the dustbin. Good. Next is watering trees and plants. So इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, हमें हमेशा प्लांट्स एंड ट्रीज को वाटर करना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए. ठीक है, तभी तो वो ग्रो करेंगे ना, अदरवाइज वो छोटे बच्चे ही रह जाएंगे. ओके, सो व्हेन वी वाटर देम दे विल ग्रो एंड बिकम ट्रीज. ओके, नेक्स्ट इज washing hands before eating. This is very important again. We should always wash our hands before eating. खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. ओके, तभी खाना खाना चाहिए, वरना क्या होगा? तुम्हारे हैंड्स डर्टी होंगे एंड वी कैन ईट फूड. व्हाट विल हैपन? वी विल बिकम सिक. हम बीमार पड़ जाएंगे. ओके, सो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स. नेक्स्ट वन इज यूजिंग क्लॉथ बैग्स. यूजिंग क्लॉथ बैग्स. आजकल आपने देखा होगा ना कि प्लास्टिक क्या हो गई है? बैन हो गई है. ओके, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स. इंस्टेड वी कैन यूज क्लॉथ बैग्स. मतलब जो बैग्स कपड़े के बने हुए होते हैं. ठीक है, वी शुड ऑलवेज यूज क्लॉथ बैग्स. वो हार्मफुल नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बीइंग काइंड टू एनिमल्स. नॉट ओनली टू एनिमल्स, वी शुड बीइंग काइंड टू एवरीवन. ओके, हमें हमेशा काइंडनेस शो करनी चाहिए सबके साथ.
We should never hurt animals. हमें किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है, गॉड सब कुछ देखते हैं. अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो बाद में वो हमें हर्ट करेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग. सो हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट. सो व्हेनेवर यू यूज अ टॉयलेट, वी शुड ऑलवेज फ्लश इट. हमें हमेशा उसको फ्लश करना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, आपके जाने के बाद कोई नेक्स्ट पर्सन आएगा यूज करने के लिए, एंड दे विल सी वेरी अनहाइजीनिक, राइट. वो क्या देखेंगे कि आपने उसको फ्लश ही नहीं किया, एंड देन दे विल स्कोल्ड यू. वो आपको डांटेंगे. तो आपको पहले हमेशा उसको फ्लश करना चाहिए. ओके, सो दीज आर सम गुड मैनर्स दैट यू शुड लर्न. ओके, बिकॉज अगर आप लर्न करेंगे then you will become a good children. Okay, all right, next is this activity. Let's do this activity. Look at the pictures and color the correct box. हमें correct box में color करना है. So the first picture is a boy is flushing the toilet. So it's a good one or bad one? It's a good one. So I will color the tick one. I will color the thick one like this. Okay. Next is girl is watering the plants, which is very good manners. So I will color on the thick one. Next is boy is throwing the garbage in the dustbin. Again, a good manners. Next is, see what she is doing. She is giving food to the birds, being kind to animals. This is good manners. Again, thick one. Next is, see, this boy is, what is she doing? He is throwing garbage on the road, which is bad manners. So we will color on the wrong one. See, again, this person is cutting trees, which is not good. It is bad manners. We should not cut the trees. Okay. So again, it is bad. I will color on the wrong. Okay. So this is good. Good manners. Good manners. Again, good manners. But two are bad manners. We should not do these things. Okay. I hope you have learned some good manners with me and you will not forget them. Very good. I will see you in the next class now. Till then, happy learning. Bye bye. Take care.